Good afternoon, everyone. Please switch on your cameras. Mayank, Nancy, Nupur, Shweta, please switch on your cameras. Nancy, you too. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay. So let's get started. Others will join when they can. So this was the last question we were discussing yesterday, which was about the saturated and unsaturated compounds and which are more reactive. We have to remember that the unsaturated compounds are more reactive. Okay, because in the bonds like this, breaking these bonds take lesser energy than breaking the main primary bond between the C. Okay. At the same time, if the question, the thing I think when we got cut out, we were talking about was if the question is which bond is stronger? Okay. In this, the answer is this is the strongest. Yeah, good afternoon. This is the strongest, followed by this, and this is the least strong of all. Okay, so because why we say that? Because put together, all three bonds put together, this is stronger. But when we react an unsaturated carbon compound with something, usually only we break one of the bonds, which is easier to break a individual single bond. Okay. Okay, let's move on. Draw the electron dot structures of these compounds. Okay, so how do we do that? So to do that, we will first take our carbon atoms. Okay, so we take our carbon atoms. Now there are, how would this be, right? Which, can you think of the way they are connected? Okay, so what we Okay, should sir. do, sorry, Aman, you said something. Okay, so this compound is of this structure. Okay, this is what? This is an alkane, right? So all the bonds are single bonds. So in your rough side, first you decide what type of compound it is. That makes drawing this a lot easier. Okay, now, okay, what will we do now? We will take the, first we will draw this bond, right? It is a single sharing, okay, here. So we can draw this. Then there is a sharing with hydrogen atoms.
Okay, so if you want, you can draw these circles. Okay, obviously this won't be circular because I have drawn them too far. Drawing the circle is optional. So this is our compound. Okay, in this you will notice that I have shown the electrons of carbon as crosses and the electron of hydrogen as a dot. Okay, Aman, please keep yourself on mute. मैं अमन बंद कर लो यहाँ सर आवाज ना आ रही अमन की वजह से Aman, can you mute yourself? Okay, and please switch on your cameras. All lot of students have switched off the cameras. Please keep them on. सर Anchal, नेटवर्क प्रॉब्लम है शिव नेटवर्क प्रॉब्लम में वीडियो ऑन हो जाता है, फ्रोजन आता है, ठीक है, आप ऑन कर लो, सर फ्रोजन बार बार कनेक्शन हट जाता है फिर ऐसा होना नहीं चाहिए. ओके, चलिए, लेट्स फर्स्ट सर नाउ होता डू है द. मैं जब भी दे रहा हूँ नहीं तो मैं So now what type of compound is this? Let's draw the electron dot diagram for this. Can somebody tell me what type of compound is this? So Alkene. it is an alkene. How do you find out that it is an alkene? By the number of electrons of hydrogen and carbon. Number of atoms, right? Not number of electrons, by number of atoms. Okay, so what we should remember is that alkanes, right? Alkanes have a generic formula which is CnH2n plus 2. Alkenes, okay, single alkenes, it means only one double bond, will have a generic formula of CnH2n. An alkyne will have a generic formula of H2n minus 2. Right? So here we can say this is N and this is 2N, like it was 2N plus 2. Right? So by comparing it with these formula, we are able to find if it is an alkene alkyne, especially in case where there is a single double bond or a single triple bond. If they are two double bond, etc., then the complexity increases, of course. Okay, which is unlikely a structure that will come for you to draw. Okay, now let's draw this one. So we will have two carbon atoms. Let me draw them a little bit closer. Okay, so they will be sharing two each. And how many hydrogen atoms will be here now? Just two. Shiv, keep yourself on mute. Okay, so this is our. सर वो मेरा छोटा भाई है बार बार चला दे Okay, this is the structure for this. And now this similarly is HCN CN2n minus 2, right? So this is an alkyne. So we will have two C's, and now they will have a triple bond, and only we will be left with one hydrogen bond each.
Okay, so now पढ़ लो जाऊंगा तो मैं काय okay, this is the structure for this. Any questions on how to draw structures? What would you call a compound of carbon and hydrogen only? A compound which contains only carbon and hydrogen and nothing else. Can somebody answer? What are such compounds called? Hydrocarbons. Okay, ऊपर थमाना जा रहा only hydrogen and carbon. Okay, hydrocarbon. So there can be questions related to this. For example, is alcohol a hydrocarbon? Is alcohol a hydrocarbon? Can somebody answer that question? बेटा ये आसान अभी मैंने बताया ही है. So is alcohol a hydrocarbon? अच्छा अल्कोहल का फॉर्मूला बताइए. लगी रूम अमन, अंचल, चंदू, switch on your cameras. हिमांशु, हितेश, निशांत, बेटा कैमरा ऑन करिए. समझा तभी अभी कर रहा Chandu, if I hear noise from your side, I'll remove you now. Okay? This disturbs the entire class. Okay? Tell me, is alcohol a hydrocarbon? Alcohol, when we say alcohol, we mean ethanol. बुरी बात है Okay? C2H5OH. सर जी अल्कोहल अल्कोहल बुरी बात होती है क्या चीज? I didn't understand. क्या बोला आपने चंदू? What did you say, Chandu? Okay, alcohol is C2H5OH. मतलब ethanol. अल्कोहल बुरी बात होती है चंदू डिस्टर्ब करना क्लास को गलत बात होती है. ठीक है, आप मन लगा के पढ़ सर लीजिए. नीरज सर इसको रिमूव कीजिए. नीरज सर इसको हाँ. रिमूव कीजिए. और ये वीडियो ऑन नहीं कर रखी है काफी बच्चों ने. बेटा वीडियो ऑन कीजिए, आप लोग सभी वीडियो ऑन कीजिए. अमन, हितेश, प्रशांत, शेखर एंड रुद्रा. और ये डिस्टर्ब जो भी कर रहे हैं, आपकी कंप्लेंट होगी फिर आप लोगों की. डिस्टर्ब नहीं करेंगे कोई भी और क्लास को चलने दीजिए.
Aman and Hitesh. वीडियो ऑन कीजिए अमन सर, वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं अमन, इसे रिमूव कीजिए। एंड हितेश ऑल्सो। प्रशांत पवार पनव, प्रियांशी सिंगल एंड रुद्रा, वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन कीजिए रुद्रा। शेखर कशाना, वीडियो ऑन कीजिए। सर कंटिन्यू सर। Thank you, sir. ठीक। ओके, सो एथेनॉल में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, सो इट इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। ओके, सो केवल हाइड्रोजन और कार्बन का होना इनफ नहीं है, इट शुड हैव नथिंग अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन फॉर इट टू बी कॉल्ड अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सो give me an example of a hydrocarbon now. Methane. Okay, CH4. So that is a hydrocarbon. Okay, now tell me, will benzene be a hydrocarbon? Anybody can tell if benzene is hydrocarbon? Benzene is one cyclic compound. Yes, it is. It is C6H6. It is a cyclic compound. Okay, I have a question on its structure later, so let me not do that here. But it's a cyclic compound. Okay, and since it is a cyclic compound, it makes no difference. Those things make no difference. It should have only hydrogen and carbon to be called a hydrocarbon. Which is the heteroatom in alcohol? Alcohols में, not just ethanol, any other alcohol, उनमें heteroatom क्या होता है? Hydroxide. हाँ, so hydroxyl जो है, this is called hydroxyl, right? This is not the heteroatom. What is hydroxyl? Hydroxyl is the functional group. Excuse me. Hydroxyl is the functional group. Heteroatom का मतलब होता है, yes sir. नीरज सर, सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक बार और डिस्टर्ब करूंगा। हाँ बिल्कुल सर। ये जो बच्चे वीडियो ऑन नहीं कर रहे ना, आप इन्हें रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज कीप ये कौन किसका अभी? हितेश, यू आर द ओनली वन हु हैज स्विच्ड ऑफ द वीडियो, व्हाई? सर हितेश और रुद्रा शर्मा। रुद्रा तो एक्चुअली कनेक्ट रिमूव कर दीजिए सर। रुद्रा तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो उसको तो आई रिमूव। ओके, मेरे में आता है ना सर? हाँ वो उसमें वो his mic is not connected but others now. हाँ ओके, ठीक है, ओके। So कंटिन्यू so सर। OH hydroxyl, right, is the functional group. Heteroatom का मतलब होता है atom other than oxygen, other than carbon or hydrogen. So जो भी एटम कार्बन या हाइड्रोजन को छोड़कर ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, उसको हेटेरोएटम कहते हैं। तो कि अल्कोहल्स में कौन सा हेटेरोएटम होता है? Maybe oxygen. Yes, it is just oxygen, right? It is just oxygen.
तो अगर हमसे हेट्रो एटम पूछा गया तो आंसर इज ऑक्सीजन, अगर फंक्शनल ग्रुप पूछा गया तो हाइड्रोक्सिल इज द आंसर, OH, तब पूरा ग्रुप आएगा। अंडरस्टूड? तो ये नॉमेनक्लेचर की बात है, किस तरह से हम चीजों को नेम करते हैं, नॉट कंपाउंड नॉमेनक्लेचर, बट जो हम नेम्स यूज करते हैं साइंस में, उस वो क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आंसर आप करेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अब क्या हो गया, इस चैप्टर में से जो बल्क था, जो सबसे हैवी पार्ट्स थे चैप्टर के, वो इस साल हटा दिए गए। ठीक है ना? तो ज्यादा सालों में क्वेश्चंस किस चीज पे आए हैं? एस्ट्रिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन, है ना, सोप एंड डिटर्जेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादा आते थे, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, इन चीजों पे क्वेश्चंस ज्यादा आते थे, और वो सब तो हटाई दिए हैं। जो नॉमेनक्लेचर है वो भी फंक्शनल ग्रुप वालों के हटा दिए हैं। तो चैप्टर में बहुत कम बचा है, तो अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो इन्हीं बेसिक्स पे आने के चांसेस हैं। ऑब्वियसली वी डोंट हैव एनी रेफरेंस मटेरियल नाउ, क्योंकि जो पुराने सालों के क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर नहीं आएंगे इस चैप्टर में, वो क्योंकि आउट ऑफ कोर्स हो गए हैं। तो इस बार इतने कम कोर्स में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह के आएंगे, एंड दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू focus on that. You should not lose marks when such a small thing comes, right? It could be a 1 mark question. You should be able to say heteroatom in any alcohol is oxygen. What about a ketone? Ketone में कौन सा हेट्रोएटम होता है? राइट, ऐसे होता है कीटोन। So same oxygen. फिर ऑक्सीजन है इसमें। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इवन इन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वहां पे भी हेट्रोएटम केवल ऑक्सीजन ही है। तो अब कोई ऐसा कंपाउंड आप मुझे बताइए जिसमें हेट्रोएटम ऑक्सीजन के अलावा कोई और हो, और जो हमने पढ़ा है कोर्स में। क्योंकि ये जो मेन हमारे हैं एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी में ऑक्सीजन ही है हेट्रोएटम। तो कोई और बताइए जिसमें ऑक्सीजन के अलावा कोई और चीज हेट्रोएटम हो। कौन? हेलो कंपाउंड्स, जिसमें हैलोजेंस होते हैं, राइट? जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, इन सब में हेट्रोएटम्स क्या है? इसमें क्लोरीन है, जैसे हैलोजन है, राइट? सो हेट्रोएटम जरूरी नहीं है ऑक्सीजन हो, कोई और भी हो सकता है, और एक से ज्यादा हेट्रोएटम्स भी हो सकते हैं। But differentiate between heteroatom and the functional group. That is important. Write the structural formula for the functional group in alcohol and in ketone. ठीक है? तो अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखेंगे हम? जस्ट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बस ये है इसका आंसर। ओके, दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप which is the group for alcohol. कीटोन का कैसे लिखेंगे हम? See, if you look at in ketone, it's just an oxygen attached, right? But group कैसे लिखेंगे हम उसका? We will have to write the group like this. Okay, we write the group like this to show that there should be carbon on both sides and the middle atom should have oxygen on it. Okay, now
टेल मी कि कीटोन और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लिखने में क्या फर्क होगा? Can somebody answer that question? अगर अब मैं कहूं एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लिखना है तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? देखिए, जब एल्डिहाइड का आप लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे. Now, what is the difference between these two? The difference is कि इसमें सेम ग्रुप होता है. देखा जाए तो केवल ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड इज अटैच्ड टू अ कार्बन, बट इन एन एल्डिहाइड इट्स अटैच्ड एट द टर्मिनल कार्बन. जो फर्स्ट कार्बन है उस पे अटैच्ड होता है, और ये चेन में कहीं बीच में अटैच होता है. बस उतना ही फर्क होता है. इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी सिमिलर होती हैं, लेकिन स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट ग्रुप्स बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर different enough to be called different groups. Okay. Can somebody tell me the functional group for carboxylic acids? देखिए, लिखते ऐसे हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन अगर हमें पूरा ग्रुप लिखना है तो कैसे लिखेंगे? C double bond O and a single bond OH. Okay, on this side will be either a H or a complete chain. ठीक है, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप. What is meant by functional group? We have talked about what are functional groups, उसके examples देखे हमने, लेकिन what is the definition of functional group? How will you define a functional group? Somebody So a can. group of atoms in hydrocarbon that are not carbon or hydrogen. Huh. But that is not the complete definition, okay? Because that will be the definition for heteroatom, right? So the definition would be the heteroatom, right? And the group containing it. Which is attached to a chain or cycle. Okay, it can be any kind of a compound. Okay, and is responsible for the chemical properties. Okay, you can also use the word behavior if you want. Okay, of that compound is called a functional group. ठीक है? Understood? So it is the, along with the heteroatom, the entire group. So अगर हम बात कर रहे हैं OH की, तो we do not call just O, which is the heteroatom, as the functional group. The entire this thing is called the functional group. Similarly, अगर हम बात कर रहे हैं carboxylic acids की, तो we do not call, we have this and this, right, in the carboxylic acid.
लेकिन हम ये जो कार्बन है इसको भी ग्रुप में ही मान रहे हैं। अब क्यों मान रहे हैं? क्योंकि द हेटेरो एटम एंड द ग्रुप कंटेनिंग विच इज अटैच्ड टू अ चेन। तो ये पूरा एक साथ ही अटैच या डिटैच हो रहा है चेन से, इसलिए इस पूरे को मिलाकर फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं। और जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है। Okay, so this is the complete definition that you should be able to write, okay, in a definition kind of a question. Okay, just give me 1 minute. I have to just quickly mark that and then so give me. The compounds in the same homologous series need to have the same number of carbon atoms. However, their arrangements can be different. True, false? यहाँ पे कीवर्ड है homologous series. So you should know what homologous series are to answer this question. Is it a must for a homologous series members to have same number of carbon atoms? No, sir. No, They definitely have not. the same molecular formula. They do not even have the same molecular formula. Homologous series members do not have the same molecular formula. So what is a homologous series? Okay, Similar forget. chemical, similar functional group. Yes, Generic which has the formula. same. Yes, they have a same generic formula and have the same functional group. Very good, very good. So, अगर यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन को बदलना चाहूं, मैं ये कहूं होमोलोगस सीरीज की जगह कोई और वर्ड या फ्रेज डालिए ताकि ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए। तो मैं क्या डाल सकता हूं यहाँ पे? I could have said isomers, Yes, right? sir. क्योंकि आइसोमर्स में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं लेकिन अरेंजमेंट अलग होता है उनका, राइट? सो आई कुड हैव यूज्ड द वर्ड आइसोमर टू मेक दिस सेंटेंस करेक्ट, ओके? लेकिन होमोलोगस सीरीज में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक्चुअली नहीं होते हैं। दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस कि उनमें कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं एज वी बिल्ड अप द सीरीज, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, राइट? सो ये डेफिनेटली गलत स्टेटमेंट है। The consecutive elements of a homologous series differ by 14 unit. so obviously because I haven't clarified how you should answer the question, but your answer is correct. They differ by 14 U in molecular mass, right? So in the molecular mass, they differ by 14 U. Very good. Or we can say they differ by in the chemical formula by CH2. Okay, both are correct answers because I haven't specified in which unit you have to answer. Okay, so both of them will be correct answers. The physical properties of members of a homologous series are identical. True, false? False. What is the correction? Chemical properties. Properties. Chemical properties are identical. Very true. What about the physical properties? How will you correct the sentence maintaining physical properties in the sentence? Have gradual gradation. ठीक है ना?
तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे हम जाते हैं तो वो स्लाइटली एक तरह से चेंज होती हैं। जैसे मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट, यूजुअली जैसे जैसे हम वी कीप एडिंग CH2 to it, the melting point and boiling point slowly keep increasing with addition of each CH2. ठीक है? Similarly, the density would also slowly increase. Okay, and some more physical properties like viscosity, etc., can also be slowly moving with the addition of more CH2s. ठीक है? तो ग्रेजुअली चेंज होते हैं, ड्रामेटिक चेंज नहीं होता है, हैव अ ग्रेजुअल ग्रेडेशन. केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल और नियर आइडेंटिकल. ओके, for theoretical purpose we can say they are identical. In reality they are near identical. Okay, name the compound. What is the name of this compound? Butene. हाँ, तो सबसे पहले because I haven't given you the structure of the compound, so we will assume they are one of the simplest structure available. So because I can change the structure and the name will change. The truth is this, but we will assume that it is a single chain. Okay, so this is N, so this is 2N, right? So it has one double bond and it has 4 carbon atoms. So the simple name to this will be butene, right? So this is the simple name. Obviously, this is not the complete name because I haven't given you the full chain design, right? So we do not know on which carbon atom is the double bond, etc. So that we can't write. Name the compound. Again, name, give a simple name. Assuming the Hexyne. it is hexyne, yes. What will be this? Pentane. This is N and this is 2N plus 2. So this is pentane. What will this be called? So this is N, this is 2N plus 1, right? And then OH. So it is an alcohol. And which alcohol is it? With 4 carbon atoms. So butanol, right? What about this? So butoxylic. हाँ, देखिए ये कार्बोक्सिलिक, हाँ, लेकिन 5 है टोटल, नॉट 4. 4 plus 1, 5. पेंटोनिक. हाँ, pentanoic acid. Okay, so this will be pentanoic acid. Did you understand why pent and not but? Yes, sir. Right? And that is a common mistake that does happen because when we see it, right, it looks like 4 and this looks like a functional group, but we calculate all the C, right? So they are in a straight chain. That is an assumption we are making. And if it